Yet another beautiful day to have you, beautiful people. So, this is Anubhav, your own friend, your own colleague, and your own competition for UPSC. So, I'm gonna share the notes of Ravi Jain sir, who has achieved UPSC CSC 2019 with the ninth rank. So, this is his personal notes, his personal handwritten notes. So, I just want to let you know that you are really blessed to have this. So this is the course in which I'll be completing all the syllabus from his notes chapter wise. So the playlist name is Psychoietian for the obvious reason, right? So I'm gonna start. This chapter is development, human development, chapter 4, paper 1, and let's get it going. Let's get it going. Let's get it going. Yeah, this is it. Development of human behavior and maturation. What is it? The bodily changes that are relatively independent of the environment. Fetus development, walking, dating, uh, sorry, smiling, etc. So if you really wanna have this playlist, please do subscribe to our YouTube channel so that I could serve you better. With that being said, let's go. I use Forest app. Hope you know by now. What is it? It's like Pomodoro mode. So completing in 70 minutes. Let's go. Fetus development, walking. Empirical evidence that maturation is relatively independent of environmental influence. Carmichael tadpole experiment. The experiment group is where anesthesia solutions there. Control is group is where the the tadpole is kept in water. Environment was normal, so there was no problem in development. But those who were in anesthe- anesthetical solution, they were passive for some moment, and then they were put into water. In 20 minutes, they started swimming. After 20 minutes, they were reared, not just kept but reared. पूरा पूरी उसका development anesthetical solution में हुआ था. तो this is quite impressive experiment. Carmichael tadpole experiment. उसके बाद क्या हुआ? Locomotive behavior of tadpole was maturational maturational immaturity पे था कि development पे. It's not I would rather say growth पे था, physical growth पे था. Was Carmichael said that 20-minute delay was क्यों 20 मिनट डिले हुआ? क्योंकि was wearing away the influence of anesthetical solution, जो influence था उसके environment की वजह से.
वो चला गया इन 20 मिनट्स। कंट्रोल ग्रुप पे क्या हुआ, ये कंट्रोल ग्रुप जिसको वाटर पे रखे था उसको अगर एनेस्थेटिकल सॉल्यूशन डाला गया तो वो भी स्विम नहीं कर पा रहा था, बट देन व्हेन ट्रांसफर्ड बैक टू द water they again started swimming after 20 minutes. Okay, ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है चिल्ड्रन पे। इसमें क्या होता है, डेनिस एंड डेनिस का एक्सपेरिमेंट है। ट्रेडिशनल हॉबीज, हॉबीज होप सो, कन्फाइंड टू द क्रेडल। कुछ बच्चों को क्रेडल पे ही रखा गया फॉर 13 मंथ्स, फर्स्ट 13 मंथ्स। और अमेरिकनाइज्ड हॉबीज को क्या क्या हुआ कि उसको रखा गया था नो कन्फाइनमेंट्स, नॉर्मल ग्रो हुआ वो। तो दिस वाज, सी कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट को उसको कंट्रोल नहीं करते, एक्सपेरिमेंट ग्रुप को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप कौन सा था, अमेरिकनाइज्ड, क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं किया गया। ऑपरेशनल ग्रुप वो होता है जिसको कंट्रोल किया गया हो, तो वो कौन था, ट्रेडिशनल हॉबीज। डेनिस ने एक्सपेरिमेंट किया है, तो started walking. Okay, they started walking in some time, which was the biggest achievement because 14 मंथ के बाद जब उनको ट्रेडिशनल वाला को 14 मंथ्स में दोनों ही चलने लगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिकनाइज्ड चलने लगा था, बट all of them started walking in 14 months. So that really shows that the development is not equal to maturation, or rather we could say maturation is there are empirical evidence that maturation is relatively independent of environmental influence. environment में क्या होता है, डेवलपमेंट होती है, तो डेवलपमेंट के टाइम पे इट रियली डजंट मैटर कि आप एम्पेरिकल एविडेंस कौन सा था, एक डेनिस का था जो कि बच्चों पे किया, और करमाइकल था जिन्होंने टैडपोल पे किया एक्सपेरिमेंट। टैडपोल आई गेस इट्स अ frog species. Correct me if I'm wrong. I could be there. I'm having a bit of cough because of the cold weather, so pardon me for that. But my voice could be so deep. Relationship between growth, maturation, and learning. Growth is physical growth. Maturation is what? The influence of, let's just see. Growth refers to biological, which is biological. It depends on the size. Quantitative होता है ये. डिफरेंस क्या है ग्रोथ और मैच्योरेशन में? द ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन ग्रोथ। ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन मैच्योरेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करता। environment, so which is a major takeaway. So guys, I would highly recommend that you subscribe to my channel, and
take the benefit of for free notes. These notes are particularly made for UPSC, CSE, psychology with the syllabus in mind. Syllabus completed. This chapter is of 7 pages, and all of which are I will be completing in less than uh, 70 minutes or so, because मैंने लास्ट दो चैप्टर भी कंप्लीट करी है कुछ एक घंटे 10 मिनट में. So I would highly recommend that you go through it just for the revision purpose and to make notes of your own from these, because it would be really difficult to read sometimes here. तो डिफरेंस क्या है? ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है इन्वायरमेंट, लेकिन मैचुरेशन को इन्वायरमेंट नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों ने डेनिस का चिल्ड्रन वाला एक्सपेरिमेंट और कैम व्हाट वाज इट कैम करमाइकल करमाइकल टेडपोल एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा कि मैचुरेशन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट. Okay, let's go up. Maturation refers to development cells to the point that can be fully and totally utilized by the organism. इसमें cells का development होता है basically. The maturation is about it's also biological, but यहाँ पे environment का रोल नहीं होता, ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता environment का. हम लोग जो नोशन समझते हैं कि a mature person is because of the environment he is living in, which is not true with this concept of psychology here. Totally influenced by the organism, maturation involves genetically controlled alteration that brings the point of rightness. Rightness, what is it? Spreading or breeding? Point of control alteration होता है. Maturation involves genetically controlled होता है ये, that being dash to the point of rightness. I don't know what he has written. देखो, for example, 5 months old cannot walk, तो which is because of genetics, because genes में कभी हमारा हुआ ही नहीं है. There's a concept called gene memory, जिसमें stored रहता है कि हाँ genetically their parents and grandparents and the elder parents, grandparents, उन्होंने the evolution कैसे हुआ है, that is stored in gene memory. The point at which one organism becomes mature enough to start conquering new development tasks is referred to as state of readiness. Maturation is unfolding of inherent traits. Maturation is unfolding of inherent traits, which is genetic. Maturation is mostly genetic. That really is. लेकिन growth क्या है? Growth is genetics plus environment. लेकिन maturation is all about genes. देखो, phylogenetic functions such as walking, sitting, etc. development comes from the maturation and learn in the form of training has little advantage.
comes from maturation and learning in form of training. यहाँ पर ट्रेनिंग होता है. जेनेटिक्स भी है, लर्निंग भी है. लर्निंग कहाँ होगा? इन्वायरमेंट से होगा. हैज़ लिटिल एडवांटेज although controlling environment to reduce opportunity can retard the development if the constraint imposed is very severe. Very severe अगर constraint होगा तो रिटार्ड कर सकता है मैचुरेशन लेवल. बट इन नॉर्मल केस सीवियर तो हम लोग नहीं करते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का भी फैक्टर है. मल न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलेगा तो फिजिकल ग्रोथ जो होना चाहिए था एज पर द जीन्स वो नहीं होगा. Environment is development that comes from exercise and effort. Learning. So guys, if you haven't subscribed, do subscribe so that आपको ये सारे नोट्स फ्री का मिल जाए. और मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे ही नोट्स फ्री में अवेलेबल है रवि जैन सर के इन जिप फाइल. सो आई वुड रिकमेंड कि आप वहाँ पे जाएँ, डाउनलोड करें और सारे बेनिफिट्स ले लें इनका. तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस. Development that comes from exercise and effort on the part of individual. ये एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज है फॉर डेवलपमेंट, है ना, फ्रॉम इन्वायरमेंट इटसेल्फ. मैचुरेशन प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर लर्निंग, ओके, in ontogenetic function, which are the functions that are specific the individual, such as swimming. Learning in the form of training is essential. यहाँ पे ontogenic function होता है, which are individual functions that are specific. कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सीखी जा सकती है, लाइक स्विमिंग. लर्निंग टू स्विम इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग इज एसेंशियल, क्योंकि वो बाय बॉर्न नहीं आएगा स्विमिंग, बिकॉज वी आर नॉट बॉर्न टू स्विम. ऑल द फिश and like water animals are, but we are not born to swim. चलो यहाँ पे देखते हैं the 3 important facts that emerge from knowledge and maturation. Knowledge of maturation and learning. Because of human beings are capable of learning वेरिएशन. देखो ह्यूमन इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे हो रहा है. बिकॉज ऑफ ह्यूमन आर केपेबल ऑफ लर्निंग, वेरिएशन इज पॉसिबल. लर्निंग के वजह से ही वेरिएशन हो रहा है. इंडिविजुअल डिफरेंस in personality, attitudes and interests cannot come from maturation alone, but in fact a result of maturation and learning. इंडिविजुअल डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? लर्निंग से आ रहा है. हमारे इसके सिलेबस में भी कहीं ना कहीं लिखा है ऐसा ही कुछ. मैचुरेशन सेट्स द लिमिट beyond which learning cannot occur. Maturation is the limit कि हाँ आप इतना ही ग्रो कर सकते हैं because of the genes, but learning cannot be
taken forward to for the development. Development बहुत ज़्यादा maturation जितना सेट किया गया लिमिट बाय योर जीन्स, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते in any way. So that is a real constraint you have, right? There is a definite timetable for learning determined by development readiness. डेफिनेट टाइम टेबल होती है कि क्रिटिकल टाइम जिसे कहते हैं डेवलपमेंट में, उस टाइम पे आप लैंग्वेज लर्निंग काफ़ी अच्छे से कर सकते हो. इन लैंग्वेज चैप्टर 13 वी विल स्टडी दैट. इसके बाद मैं उसी के लाऊंगा चैप्टर 13. सो प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट आपको इसके साइड बाय साइड आपको डेवलपमेंट का लैंग्वेज वाला पार्ट भी पता चल जाए. लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन चैप्टर 13 पेपर 1. There is definitive timetable for learning determined by the development readiness. Development readiness होती है यहाँ पे. देखो, growth is because of the maturation which is about the genes. Development is because of the learning. Okay. तो मेरा भी वैल्यू एडिशन है, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ ऐड किया है. मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स लिखे हैं कुछ कुछ अपने नोट्स में. तो let's see if you want to download and go and download from uh, my YouTube चैनल. डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, which is लाल बत्ती, है ना, because that is the purpose of our kind of hustle we are having right now. Okay, so मैंने काफ़ी सारे टैक्टस भी रियल लाइफ डाले हैं कि वॉट एवर मिस्टेक्स आई हैव डन एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड अपॉन. सो आई वुड रिकमेंड कि you go through it. Okay. All right, let's go. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेवलपमेंट के? तो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट एज क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव पता नहीं क्या हुआ आज. Starts with one thing. I don't know why, but you gotta know why. It starts with conception in the womb. Okay, both growth and development imply changes in behavior. Behavior में changes आएगा, personality makeup में changes आएगा. Stages क्या क्या है? Infancy है, babyhood है, childhood है, टू स्टेज एडोलेसेंस है 2 स्टेज में, अर्ली अडल्टहुड है, मिडिल अडल्टहुड है, ओल्ड एज है. सो आई डोंट थिंक दिस time period as well as the stages concerned, but you could just make your stages on your own. इनफेंसी कोई अगर में कुछ और भी डाल सकते हो, फीटस डाल से स्टार्ट कर सकते हो, एंड बेबीहुड एंड थिंग्स लाइक दैट you could make on your own. Principles are very important. Principles क्या क्या है? Development involves changes and goal of these changes in the realization and of hereditary potential. Okay. Development involves changes and the goal of these changes is the realization of hereditary potential. Okay.
हेरिडिटरी पोटेंशियल ही आपका क्या था, मैच्योरेशन था, है ना। और डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव है। ओके, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल है अर्ली डेवलपमेंट, बिकॉज वहाँ पे क्रिटिकल टाइम भी होती है। Later development and their and this early foundation are both influenced by learning and experience. ओके, यहाँ पे भी लर्निंग होती रहती है अर्ली डेवलपमेंट में भी। इट्स नॉट दैट कि बड़ा होके ही हम लोग सीखते हैं। आई इज रियली वाटरी राइट नाउ बट कांट हेल्प। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। सो आई वुड रिकमेंड कि इसके बाद आप एक टेस्ट लगा लो एंड क्वेश्चन देख लो प्रीवियस ईयर्स के, विच विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू गाइस एंड स्टिक टुगेदर लास्ट टाइम तक, ताकि मैं आपको अपना ये इस चैप्टर का सिलेबस भी दिखाऊं और रेट कर पाऊँ कि हम लोगों ने क्या कवर किया और क्या छूट गया आफ्टर दिस नोट्स। सो ये नोट्स कुछ 7 पेजेस के हैं, A4 शीट पेपर पे लिखे गए हैं। तो इट इज़ अ वेरी लेस, वेरी concise, brief and to the point. Development comes as a result of interaction between maturation and learning, with maturation setting the limits of the development. Patterns of development are predictable, though this can be delayed. Okay, though this can be delayed. If the conditions are unfavorable, development follows following sequence. पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट आर प्रेडिक्टेबल होते हैं कि बच्चा 1 साल के पे चुनना सीख 1 साल के बाद सीखना चलना सीखेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। डेवलपमेंट फॉलोज द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट इज अप हॉलो कॉडल। अच्छा हाँ, which is head to toe, from top to bottom we grow, and proximodistal, which is center to peripheral, है ना। Development is a continuous process, I guess. uh, I don't know, डिफरेंट रेट्स में होती है हमारे पार्ट्स की। लाइक हमारा ब्रेन जल्दी डेवलप होता है, लेग्स लेट डेवलप होता है, तो डिफरेंट रेट से ग्रो करता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स। दे आर डिफरेंट individual difference in development, partly due to environmental factors। इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट प्ले कर रहा है। इन्वायरमेंट कहाँ पे आ रहा है, लर्निंग पे आ रहा है ना। लर्निंग एंड डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट आ रहा है, मैच्योरेशन इन्वायरमेंट का काम ही नहीं है। The practical significance is not expecting all children to progress at the same pace, है ना। Children have their own learning capability and capacity to learn at a particular rate, not at the same pace. There are periods in developmental patterns. Within each period, there are times of equilibrium and disequilibrium. कभी इक्विलिब्रियम पे जाएगा, कभी डिसइक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो डेवलपमेंटल पैटर्न्स
जो है उनके पीरियड्स होते हैं कि कब आप डेवलप करोगे. विद इन ईच पीरियड देयर आर टाइम्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी होगा और डिसइक्विलिब्रियम भी होगा. There are social expectancies for each development period. हाँ, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इस टाइम पे बंदा माँ 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 व्हाट इज इट बैबिंग सीखेगा, कुकिंग सीखेगा एंड थिंग्स लाइक दैट. इस साल से चलना स्टार्ट करेगा, इस थिंग्स लाइक दैट. Every area of development has potential hazard. Potential hazard क्या होता है? Potential hazard psychological हो सकता है, physical हो सकता है, social हो सकता है, which may alter the pattern of development. Alters the pattern of development. Happiness varies at different period in a developmental pattern. Okay, developmental task क्या होता है? I guess Navi Ghust, or I don't know what a psychologist name has, is there, has defined development task. Development task is given syllabus, so do make a note of it. Task है ये एक तरह का task ही है which arises or about a certain period in life. An individual successful achievement of which leads to happiness. एक स्टेज में वो टास्क कंप्लीट करने के बाद हैप्पीनेस मिलती है. सक्सेसफुल achievement leads to happiness, and the success with the later task while failure leads to failure से क्या होगा? Unhappiness. So that is developmental task and difficulties with the later task. Every cultural group expects its members to master certain skills. यहाँ पे कल्चर का इन्फ्लुएंस है, कल्चर ग्रुप, because you remember development is environmental factor, so culture would play an important part into it. Expects member to master certain skills and acquire pattern of behavior at various stages during the lifespan. Okay, acquire pattern of behavior. एक पैटर्न जनरेट करता है उस कल्चर में. एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है ऑफ कल्चरल ग्रुप, एथनिक ग्रुप, सोसाइटी. तो सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है. फिर पेपर 2 का काफ़ी सारा इम्प्लीमेंटेशंस भी यहाँ पे आता है. पेपर 1, सो पेपर 2 का भी आता है. Of behavior at various stages, pattern at various stages during the lifespan. This can be called developmental task. Several forces such as physical maturation काम आएगा, which is very genetic. Cultural pressure काम आएगा. Cultural pressure है कि हाँ तुमको ये करना है, करना है, करना है, करना है, करना है.
देन पर्सनल वैल्यूज भी काम आएंगे कि व्हाट आर योर वैल्यूज यू होल्ड. ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ डेवलपमेंटल टास्क. ऑब्जेक्टिव क्या है डेवलपमेंट टास्क का? दे serve as a guideline that evolve individual to know what society expects them at a given age. It मोटिवेट करने में काम आ रहा है क्योंकि अगर कोई एक्सपेक्ट करता है तो दैट वुड बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू टू डेवलप. नेक्स्ट, what social group expects them to do at certain ages during their life. It motivates the individuals to do what social groups expects them to do at certain age, or it shows the individual what lies ahead and what they will be expected to do the next stage. Okay, so expected to do at the next stage, that could be highlighted है ना, क्योंकि वो प्री डिफाइंड होगा. लाइक योर सोशलाइजेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया. So we'll study that. Adjustment to new stages situate. It must be situation. Adjustment to the new stages and situation accommodation होता है is always difficult. Accommodate करना होता है वहाँ पे हम लोगों को. Critical period, ये देखिए, this is a very important concept that you got to mention it. Okay. Many ethologists believe that human beings, like many animals, involve critical period. Many animals के पास भी होता है, not just humans, but animals के पास भी critical period होता है सीखने के लिए, जहाँ पे सीखना काफ़ी आसान होता है. उसके बाद it would be comparatively very quite difficult to have that pace and that cognitive abilities to uh, acquire new knowledge and implement it. Individual period in which child must experience social or sensory input and development has to proceed normally. Thus, critical period is limited. Limited होता है ये limited time span during which child has biologically prepared to acquire certain adaptive behavior, but need support of an appropriate support चाहिए होती है, appropriate stimulating environment चाहिए होती है. Okay. Animals involve critical period which your child experience social or sensory input. लॉरेंस का काफ़ी important experiment है यहाँ पे. Works on duckling. Okay, let's see what it is. It's a imprinting phenomenon. Strong bonding between caretaker and young ones. Bonding. Strong bond in caretaker and the young ones develop. Okay. Develop during the critical period. Okay. लॉरेंस का काफ़ी important phenomena.
let's try to highlight this one with a new color. Okay, tolerance. Then हार्लोस का काफी important experiment है on monkeys that is demonstrated a comfort level, जो कि दो टाइप ऑफ टॉयज होते हैं, एक वायर्स के बने होते हैं और एक कॉटन के बने होते हैं। जो कॉटन के बेबी पेन्स होते हैं उस पे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे वो सारे छोटे बच्चे। दैट वाज contact comfort is quite important. If you are not comfortable when being in contact, physical contact, then it shows that you are हार्लोस एक्सपेरिमेंट और रिसर्च डेमोन्स्ट्रेट कंफर्ट लेवल की कैसे आदमी करेंट होता है और जिसके साथ करेंट होगा ज़्यादा ज़्यादा उनके साथ डेवलपमेंट भी होगा, वैसा इन्वायरमेंट भी मिलेगा। तो इट्स ऑल अबाउट द कंफर्ट दे फाइंड, द प्लेस, द इन्वायरमेंट। डेनिस का फिर से आया। Demonstrated that children adopted before age of 2 showed better intellectual development than children after age of 2. तो adopted children, डेनिस का पहला वाला एक्सपेरिमेंट भी बच्चों पे था, दैट अमेरिकन एंड ट्रेडिशनल हॉबीज, कि कौन सा बच्चा वॉक करना सीखता है, दोनों ही सीख जाता है। जो क्रडल में कन्फाइंड रहता है और जो फ्रीली डेवलप होता है, दोनों ही सीख जाता है टू वॉक। तो दैट इज अ मेजर ब्रेक थ्रू विद दिस एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे फिर नया कुछ है डेनिस का, वेन डेनिस का। एक्सक्यूज मी। Okay. Observe that the children after before 2 years of age showed better intellectual development than those adopted after 2 years. Wild boy of Evison, is it? Wild boy. And language development. Critical period, but other theorists calls sensitive period, critical period or sensitive period, दोनों ही हो सकता है। The difference between them is subtle. Okay, those theorists who believed in critical period assumes that those who do not get special stimulation, not get spatial stimulation during the window of receptivity, are going to be stuck forever, and never gain abilities, which is sensitive period or critical period, that should have gained during that period. But others who believe in sensitive period agree that children who do not nurture during this period, others scientists क्या बोलता है, do not nurture during this period would not develop to their full potential. Not nurtured, then not develop to full potential and have problem in their life, and they do not I don't know,
मीन्स परमानेंट काइंड ऑफ अनएबिलिटी हो जाएगा, not inability, or maybe inability it could be called. सोशल क्या, सोशलाइजेशन क्या है? इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. सोशल डेवलपमेंट किसने दिया है? विच इज ऑफ अटैचमेंट स्पिट्स, और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स है. तो ये देख सकते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ शेपिंग इंडिविजुअल सोशल टेंडेंसी so that he remains useful and productive member of his society. To be productive होने के लिए सोशलाइजेशन कर दिया जाता है. ब्रॉन ब्रॉन फेनचनर, is it? This experiment is given by in the NCERT also, so this becomes important. Although ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन सोशल साइकोलॉजी को एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए कि किस चीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ता है, दैट you can mention. Braun Brenner's contextual mechanism of development. Mechanism through which socialization occurs. Socialization में कंडीशनिंग होता है थ्रू सिस्टम, और रिवॉर्ड एंड पार्टिसिपेट. ऑब्जर्वेशनल लर्न करता है बच्चा, ट्रायल एंड एरर करता है, मोटर स्किल्स डेवलप करता है, ग्रेजुअल वंस एक्वायर्ड डिफिकल्ट टू फॉरगेट. रोल प्लेइंग होता है, प्ले एक्टिंग होता है, अंडरस्टैंड वैल्यू अटैच टू डिफरेंट रोल्स, आइडेंटिफिकेशन अनकॉन्शियस होता है ये. इंडिविजुअल टेक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनदर पर्सन. एजेंसीज होती है, फैमिली होती है, स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग होती है. बेकनर ने दिया है love oriented discipline by a threat of withdrawal of love. Children will have cooperation, patience, tolerance, integrity and commitment. पावर असर्टिव के लिए भी डेवलपमेंट होती है. यहाँ पे देखो, डिमांडिंगनेस, और यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस है ना. तो लो डिमांड, हाई डिमांड, लो रिस्पॉन्सिवनेस, हाई रिस्पॉन्सिवनेस. अगर लो परमिसिव होगा, कम डिमांड करेगा और हाईली रिस्पॉन्सिव होगा तो परमिसिव होगा, पेरेंट्स होगा, पेरेंटिंग स्टाइल्स पढ़ रहे हैं. हाई डिमांड होगा और हाई रिस्पॉन्सिव होगा तो ऑथोरिटेरियन टाइप के पेरेंट्स होंगे. लो डिमांड, लो रिस्पॉन्सिवनेस विच इज निग्लेक्ट, एंड ऑथोरिटेरियन टाइप के पेरेंट्स होंगे, मतलब हाई डिमांड लेकिन लो रिस्पॉन्सिवनेस. मतलब क्या हुआ, पेरेंटिंग स्टाइल है, मतलब डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्ड कम कर रहे हैं फॉर द डिमांड्स दैट चिल्ड्रन इज पुटिंग ऑन पेरेंट्स. तो लो कर रहे हैं तो मतलब डिमांड भी लो कर रहा है और रिस्पॉन्ड भी कम कर रहा है, तो मतलब नेगेटिव टाइप के है. लेकिन डिमांड हाई डिमांड कर रहे हैं लेकिन, है ना. तो मेरा था हाई डिमांड एंड हाई रिस्पॉन्सिव, काइंड ऑफ ऑथोरिटेरियन टाइप ऑफ पेरेंटिंग. निग्लेक्ट क्या होता है? cold and unresponsive, uninvolved, indifferent outcome. आउटकम क्या होता है?
Impulsive and delinquent. Delinquent is something law breaking, sort of norm breaking kind of person. Okay, power assertive होता है, children will be aggressive. अगर ज़्यादा पावर assertiveness होगा तो चिल्ड्रन क्या होगा, एग्रेसिव होगा, डिपेंडेंट होगा और सबमिसिव होगा. तो इस बंदे ने दिया है, यहाँ पे भी नाम है, आई कैनट रीड इट. आई गेस शी इज अ वुमेन. ऑथोरिटेरियन टाइप का हो सकता है, ऑथोरिटेटिव टाइप का हो सकता है, और परमिसिव टाइप का हो सकता है, विच इज लेटर एडेड बाय मार्टिन. निग्लेक्टफुल. तो हाई रिस्पॉन्सिव, हाई डिमांडिंग, वही वाला एक्सपर्ट नहीं, यहाँ पे ही भी जो है वही वाला चीज़ है यहाँ पे भी. तो एंसवर्थ का एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पढ़ना, ऑथोरिटेरियन टाइप का. तो हम लोग हैं पेज नंबर 4 पे. 4 कंप्लीट हुआ. 5 6 7 3 more pages to go. ऑथोरिटेरियन टाइप का टेलर ने दिया है, स्ट्रिक्ट रूल्स होती है इस पे. relying on strict rules, regulations to enforce desired behavior. Enforce किया जाता है. They make use of severe punishment कॉल आ रही है भाई साहब, जस्ट अ सेकेंड. Severe punishment that do not encourage children to take decision. Do not encourage, not encourage children to make decision regarding acts. Children will be aggressive. Okay, काइंड ऑफ ऑथोरिटेरियन टाइप की होगी. तो डिमांड ज़्यादा कर रही है, लेकिन ऑथोरिटेरियन टाइप के होते हैं. लेट मी चेक. ऑथोरिटेटिव मतलब यहाँ पे आएगा, विच इज़ लो डिमांडिंग बट हाई रिस्पॉन्सिवनेस.
ओके, ऑथोरिटेटिव टाइप के क्या होता है? ये होते हैं रूल्स क्लियर रहेंगे, वार्म अनरिस्पॉन्सिव होगा, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है कि ये पेरेंट्स रिस्पॉन्ड भी करेंगे, हाई एक्सपेक्टेंसी होगी बिकॉज हाई डिमांड है, सपोर्टिव भी होंगे, यूज ऑफ रीजनिंग एज प्रिंसिपल mechanism to discipline children, their children, discipline टाइप के चिल्ड्रन होंगे, deal with children in a rational issue oriented manner, high self control and high self efficacy होती है, सेल्फ कंट्रोल बच्चे में हाई होती है। एंसवर्थ का कुछ है पर उससे पहले हम लोग देखते हैं परमिसिव टाइप के। व्हाट इज परमिसिव टाइप के? वार्म रिस्पॉन्सिव होंगे, फ्यू रूल्स होगा, मतलब लेस डिमांडिंग, मोर रिस्पॉन्सिव होंगे। ओके, इंडल्जेंट टाइप के होंगे, ग्रांट इंडिविजुअल फ्रीडम, फ्रीडम मिलेगा बच्चे को, पेरेंट इज मार्क्ड बाय निग्लेक्ट, निग्लेक्ट होते हैं ये। ओके, फ्यू रूल्स है मतलब क्योंकि, लेकिन रिस्पॉन्सिव है पेरेंट्स, लेकिन रिस्पॉन्सिव मतलब रिस्पॉन्ड तो कर रहे हैं लेकिन रूल्स कम है, मतलब लेस डिमांड है तो निग्लेक्ट है। चिल्ड्रन may fall in wrong hand and become क्रिएटिव भी हो सकता है या फिर रॉन्ग पाथ भी ले सकता है। इम्पल्सिव हो सकते हैं, सोशल पुअर, सोशल स्किल्स। ओके, हार्लो का क्या कहना है? रोल ऑफ मदर, ये काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है। बॉल बाय, mother's love during infancy and childhood is as important for mental health they as are vitamins and proteins for physical health। मदर्स लव के बारे में बोलते हैं कि काफ़ी ज़रूरी है ड्यूरिंग इन्फेंसी, स्पिट्स, nursery babies deprived of maternal deprivation, maternal deprivation हुआ 6 to 8 months to display analytic depression characterized by waking spells, loss of appetite, appetite का प्रॉब्लम आएगा, इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आएंगे, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। स्पिट्स, ओके, by the time the baby is 1 year, 1 year में क्या है, old they get attached to mother। attachment is emotional bond, emotional bond that a child establishes with the attachment figure, usually the caretaker। Attachment serves as two purpose, it provides children with inter it provides children, child with the explore the environment, to explore। अटैचमेंट होगा तो सिक्योरिटी होगी एक तरह से, तो वही लिखा होगा आई गेस, सिक्योरिटी टू एक्सप्लोर।
the environment. It forms the basis of interpersonal relationship later in the life. According to the Bowlby, attachment can be understood in an evolutionary context. In that caregiver provided the safety and security. Caregiver का काम क्या होता है? Safety और security develop करना होता है to the infant. It is adaptive as it enhances something. Okay. How mothers एक second. Ainsworth का क्या कहना? Identify four major attachments. इसका भी दिया है attachment पे ही. Style, strange situation. Secure होना चाहिए. Insecure, avoidant हो सकता है. Insecure, ambivalent हो सकता है. Disorganized हो सकता है. Secure क्या होता है? When mother are responsive, warm, considerate, informed about the needs of the children. Hence, they have highlighted the and heightened empathy, compassion, unconditional positive regard, which is quite important in psychology. A psychologist of clinical psychology will study this in paper 2, Carl Rogers theory, humanist theory. Okay, unconditional positive regard. Inconditioned, insecure, avoidant, insecure, ambivalent, and disorganized. Mothers are responsive, child separations, tendency to blow hot. Disorganized is like you cannot disorganized and disoriented होता है जिसमें you cannot say what would be the response. Insecure avoidant क्या होता है कि insecure भी है because उनको compassion love नहीं मिला तो वो avoid करेंगे. Ambivalent क्या होता है? Insecure है कि पास आना चाहेंगे but then पास आके eye contacts नहीं मिलाएंगे. Mothers are unresponsive, child separation ज़्यादा होते, tendency to blow hot and cold. Okay. Mother's employment influence the children and socialization. Okay, this could be quite important. Helen B. has found that children of working mothers suffer only when there is instability in the family or child care arrangement. Instability. They could suffer. Braun Fechner, Braun Brenner, Braun Brenner. It's very difficult. Braun Brenner. Say with me. Braun Brenner. Connected, the working mothers have positive impact on daughter who come to check. Okay. Braun Brenner concluded that working mothers have positive impact on daughter. Wow, this is something unique. Who come to admire their mothers more
admires mothers more because of independent, okay, and have more healthier conceptualization of female. Wow, this is something unique. ब्रॉन फेन ब्रेनर ने कहा है, जिन्होंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला दिया था, सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, डायग्राम. The impact of boys, the impact on boys is less clear, but findings suggest that the effect is slightly negative, less positive. उसके बाद देखते हैं. ओके, मूरे ने दिया स्टडी टू exclusive mothering and diffuse mothering. Exclusive mothering and diffused mothering. No difference or very few difference in girls. No difference in girls who has received different kind of mothering. He found that the boys, those who received exclusive, were more cooperative. एक्सक्लूसिव जो थे वो लोग मोर कोऑपरेटिव थे, वेल बिहेव्ड थे, एंड इंटरनलाइज्ड एडल्ट standard behavior, particularly in regard to the self control. But boys in the substitute care, में क्या हुआ, were aggressive, relatively free from fear, डर नहीं था, independent तो थे, active भी थे, and they are more concerned about peer approval. Okay, चलो sticky note है, strange situation. Okay, 2 pages and oh, they are 10 pages, not 7. Okay, alright. Let's get going. Strange situation test. And marks between strange situation test for secure and avoidant. Get down from the mother, explode happily, touching base. What is in warm? But calm, as mother was nearby. Upset when left. Approached when she was come back. Approached. Okay. Mothers were warm, loving था, warm था, sensitive to the infant's need, and responsive. Avoidant क्या होता है? Somewhat willing to explore. Did not touch base. Did not look at stranger or mother. Not look at stranger or mother. Reacted very little to the absence. Okay. Mothers क्या थे? Unresponsive, insensitive थे. Touch base is like बच्चा जाएगा और फिर वापस एक्सप्लोर करके वापस आएगा, मामा को टच करेगा एंड देन फिर से एक्सप्लोर करेगा, which is touch base. Ambivalent, clinging or unwilling to explore.
Okay, clinging sort of personality. Very upset by a stranger regardless of mother presence. अपसेट हो जाता है अगर स्ट्रेंजर देखता है तो. मदर लेफ्ट hard to when mothers come back, demand to be picked up and brushed, I guess. Is it pushed? अच्छा, pushed her. डिमांड करता है पिक करने का वाला. और जब पिक होता है तो रखे they so like they don't need it by pushing mother away. Disorganized, unable to decide how to react, unable to decide how to react, but their eyes turned away from her. Mother neglectful or abusive होती है तो mother's response है but inconsistent and insensitive. तो यहाँ पे कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हैं. माइकल लूटर, children develop primary bond and parents and found that clerks toward children at daycare center often at advantage to those at home primarily because their daycare provide more opportunity for both intellectual development as well as social development. Okay, adverse effect if it offers sufficient contact with adults, opportunity for cognitive situation to play, opinion children develop a primary bond with parents and formed them founded or which is formed them in similar way and in similar times whether they are at homes or at. Acha. Similarly raised at home or in daycare. Adverse effect if it offers sufficient contact with the adult. Offers sufficient contact. Not have adverse effect. Cognitive stimulation होता है and to play. Okay. Children can strive in spite of temporary absence of their mother. Warm, attentive adult. Substitute care. How mother's employment will affect children's mother's attitude towards work. Mother's employment, which is here. Okay. Mother's employment affect the children. Attitude towards work, stability at home, husband-wife relationship, children, mother-child relationship, number of hours mother spend in working, quality of interaction between mother has with the children when she was at home, role of father, attachment के लिए same as that with their father interact with the child will be qualitatively different from mothers. Boys
understand that the sex role through identification of their father. Girls heterosexual adjustment, okay, are influenced by the kind of interaction with the, oh yeah, interaction with father. Understand, अच्छा वो जेंडर रोल्स समझता है बॉयज, और विमेन क्या समझती है, डज इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस बाय द काइंड ऑफ interaction they have with the father, single parent family, separation, divorce, death, or adoption, bitterness and emotional turmoil, affects psyche of children, affectionless हो जाता है. Okay, what are the issues? स्कूल का क्या है? स्कूल formal agency of socialization, reading, writing, arithmetic, curriculum, relationship, extracurriculum activities, develops cognitive competencies, social competencies, interpersonal, vocational competencies, major player, teachers, peers, and textbooks. Okay, problems क्या होता है? Divide between text and context. Okay, incompatibility between family education, फैमिली एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन अगर डिफरेंट होगा तो दिक्कत होगी. यप. पीए ग्रुप है ना, पीए ग्रुप का रोल, व्हाट इट वुड बी. So guys, been like more than one hour 15 minutes. I just want to quickly wrap this up. Interaction, uh, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सोशल सपोर्ट बनता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस डेवलप होता है, को इक्वल्स इंटरेक्शन अमंग को इक्वल्स important role during adolescence because of undergoes to identity crisis. peer associations होते हैं, aggressiveness, altruistic, cooperative हो जाता है, मॉडल बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय पीयर्स. ओके, मीडिया का क्या रोल है? सोशलाइजेशन, विकारियस विच इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और reinforcement, important in development of social and anti-social behavior. बंडूरा का क्या है? हाँ, बूबू डॉल एक्सपेरिमेंट और बोरो डॉल एक्सपेरिमेंट, डॉल एक्सपेरिमेंट, बोरो डॉल एक्सपेरिमेंट, बोबो डॉल और बोबो बोबो. impacts cognitive and social motor skills. रिलीजियस का रोल्स क्या है? साइकोथेरेप्यूटिक, solidarity, social solidarity, hope and meaningfulness, assimilate to negative experience by giving them a causal explanation, entertainment. Okay, value, socialization is a lifelong process, but the rate and pace of socialization down. Okay,
Culture can influence personality, cul- culture of behavior. Okay, socialization on which culture is transmitted from one generation to another to next, and individual develops his personality in the context of in nature culture. Personality is the behavior characteristic of individual, whereas culture personality क्या है is the behavior characteristic. Culture is the behavior that is characterized by group का behavior है और ये individual का behavior है. That is the difference. Behavior of an individual is culturally determined because the development of individual's personality takes place in a definite personal environment. Okay, all right. The behavior of the individual is culturally determined. What the F? Mm-hmm. Forest trees. Oh, oh, the trees are dead because of the call. Personality is the behavior characteristic by the individual, whereas culture is not discrete by the group of individual. Behavior of an individual is culturally determined, whereas behavior of an individual is culturally determined because of the development of individual personality takes place in a definite personal environment. Because of the environment का influence होता है on culture. Studied, there's no universal human behavior on instinct alone. No universal human behavior on instinct alone. Different culture develops different solutions to the recurrent problems in their lives. Culture develops different solutions to problems that are recurring. Okay, we found that sex roles and masculine feminine temperament are patterned by respective culture. Sex roles from culture. Okay, age is stress and strain during adolescence. Not felt in liberal attitudes towards age of Samoa. Stress during adolescence not felt in girls. Hmm, okay. Malaysia believed in non-violence. Induced in army. Entered in army. Chain excellent suitors went back. They showed that culture can induce aggression and can be resistant from aggression. Aggression can be induced culturally, but conditioning cannot negate the effect of biological factors. Okay, there are other scientists who Benedict pattern of culture क्या दिया है concept. Okay,
Each culture is patterned in a unique manner. Culture push person with unique personality. Culture से हम लोग को unique personality towards unique idea, alien with culture ideas. Alien with cultural ideas is happiest. Vy, Vygotsky का psychology, socio-cultural theories. It describes learning as a social process. Learning क्या social process है and ordination of human intelligence and society culture के through होता है. Suffer jigsaw father. Social interaction say plays an fundamental role in the process of cognitive development. He felt that social learning precedes development. Social learning precedes development, opposed by Jean Piaget's belief. Everything is learned. Believe that everything is learned has on two levels. First thing is two levels होता है यहाँ पे interaction with others and individuals mental structure. Okay, आप बस सामने वाला को और okay. Every function in child's culture development appears twice. Nice. Every function in child's culture development appears twice. First on the social level and later on the individual level. Every function in child's cultural development appears twice. Social level, individual level. First culture development twice होता है. First believe first between people and then inside the intrapsychological and interpsychological and intrapsychological. These applies equally to volunteer attention of logical memory and to the formation of concept. All the higher functions originate as actual relationship between individuals. A second aspect of Vygotsky theory is the idea that the potential of cognitive development is limited to a zone of proximal development, the area of exploration for which the student is cognitively prepared and but require help and social interaction with fully developed का help चाहिए उसको. A teacher, a more experienced peer is able to provide the scaff, scaffolding to support the students um, evolving understanding of knowledge and domains of development of complex skills. Collaborative learning, okay, discourse modeling and things like that, scaffolding strategies for supporting the intellectual knowledge and skills of learning and facilitating intentional learning. Okay, the implication of so the last page, last 10 minutes. All right. The implication of this theory is that the learner should be provided with a socially rich environment which to explore knowledge domains with the help of fellow students, teachers, experts. Okay,
Intellectual cognitive theory can be used to support learning environment by providing tools for discourse, discussion, discussion and collaborative writing, problem solving में काम आएगा ये वाला चीज. Also loop learning. What is loop learning? Genotype of genotype is psychology. Genotype is the genes and phenotype. There is an intermediate step between genotype and phenotype. Genotype and phenotype. Psychological characteristics or psychological characteristics. This step is the brain, genes, and what we how we appear. Phenotype is how we appear. Genotype is the genes. Okay, and the intermediate step is the brain. If there is genetic basis for psychological characteristic, it must be because of gene, especially certain brain brain organization that underlies the characteristics. Over the course of development, the brain develops new connections between the nerve cells that make it up, and in response to the experience and learning, and response to learning. The genotype is a blueprint for the brain. Genotype is blueprint for the brain. Adult phenotype will be okay. Has arrived at a set of criteria for identifying whether straight process behavior biological determined. Behavior emerges before it seems necessary. Criteria for identifying traits. Identify traits and behaviors. Okay, appearance of behavior is not result of conscious decision and is not triggered by external factors. Not triggered by external. Direct teaching, a little effect on. Okay. Braun Fenbrenners का ये सिस्टम है और दुर्गानंद सिन्हा का ये है, सिंपलेस्ट है. सराउंडिंग लेयर्स होती है इसमें, अपर लेयर्स होती है, स्कूल पेरेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, जो द इन्वायरमेंट थिंग. तो इंडिविजुअल होता है मेसो, एक्सो, माइक्रो. प्राइवेट स्पीच. Kohlberg, like Piaget. Moral development. Okay. From a cognitive perspective, he speaks of adolescents becoming moral philosophers. Okay. And he believes that advancements through the stages of moral development is closely tied to the progression from concrete to formal operational thinking. Concrete thinking to formal operational thinking. Okay.
National character is an expression which describes the form of what is a national character. Okay, expression which describes the collective self self perception, sensibility, sensibility, conduct, and shared by individuals in the modern nation. It presupposes existence of psychological and cultural homogeneity among the citizen होता है and each country, as well as the idea that each nation can be considered as collective individual. Okay, a nation could be become a collective individual. So guys, this is it. These were the, sorry, I just mentioned that it was 7 pages, but it has 10 pages of notes by Ravi Jain sir. So you could get it from the PDF. I would recommend that you could revise by listening to the audio of this playlist, and it would be done. Each chapter could be done in just 1 hours if you listen in 1.5x speed. All right. See you soon, guys. Please do subscribe and comment. So and please share it to your friends so that it could reach to many people as possible. Because साइकोलॉजी ऑप्शनल की चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मटेरियल अवेलेबल नहीं है, एंड सारी चीज़ों के लिए बहुत भागना पड़ता है. तो आई वुड रिकमेंड कि हाँ सारे लोगों को चीज़ें पहुँचनी चाहिए. पी रविजन सेन सर ने बहुत अच्छा काम किया. So I would recommend you guys that you could support me to support you as well as the nation. This is a small thing that I really wanted. That's it. I'll see you soon, guys. I'll be doing next chapter with chapter number 13, which is language and communication, which is part of development, human development kind of thing, but in different chapter of paper one. So we'll see you soon there. Bye.